engage your first and second lecture. ठीक है, अभी 2 घंटे में से half an hour has been wasted. So we will try to cover within 1.5 hour. So in the last lecture, I have talked about SR latch, SR flip flop. You have understood about the excitation table. You have understood about the characteristics table. Okay, and we have also understood the truth table. So truth table is actually the input output the relationship, input output relationship. And I'm not writing anything on the open board. Just listen what I'm saying. So in the truth table, we have to understand the relationship between the input and output. Then in the characteristic table, we have to understand what? We have to understand that with respect to the present state, what would be the next state? What would be the next state for the corresponding inputs? So that is called as a characteristic equation. And then we have seen about the excitation table. What is there in the excitation table? Excitation table will give us the present state with the next state with all the possibilities of the input, okay, but in general. So that is called as a excitation table. Now this excitation table, characteristic table is very important when we will be having some problems, the problems related with the flip flop. तो जब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे फ्लिप फ्लॉप के रिलेटेड, एंड इन द कॉन्सिक्यूटिव लेक्चर्स हमें ये भी सीखना है काउंटर्स क्या है. So during the counters and some problems related with the flip flop, we have to use this characteristic table as well as excitation table. So that time it has more importance. Okay. So please remember we have only 3 tables: truth table, characteristic table, and the excitation table. Now, as far as the characteristic table is concerned, we also can have a characteristic equation which is drawn from the characteristic table. Okay. Now, in the last lecture, I have drawn the characteristic table of your SR flip flop. Okay. So now see on the open board now. So we have seen the characteristic table of SR flip flop Yes. So in the characteristic table, from using this characteristic table, we have to derive the characteristic equation. So in the characteristic table of SR flip flop, we have already seen the present state, then the inputs are S and R, and the next state. So short form also you can use PS, that is a present state, and S, that is for the next state. So we have seen the different combinations starting from 0, 0, 0 to 1, 1, 1. So 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. And I think the table, the next state is given as 0, 0, 1, don't care, 1, 0, 1, and don't care. So this was the characteristic table which we have already discussed in the last lecture about the SR flip flop. Now using this characteristic table, we can also draw the characteristic equation. So what is that characteristic equation? So this characteristic equation will be drawn for the next state. So you know the present state is given by Qn, and the next state is given by Qn plus 1. So you will have the equation for Qn plus 1. So we have to see the column of Qn plus 1. So using this column of Qn plus 1, we can have the
characteristic equation by using the K-map, So here we have to have a K-map for Qn plus 1. So I'll be having the K-map for Qn plus 1. That is the next state. So we will be drawing the K-map for this next state Qn plus 1, taking the variable as Q1 SR. So we have the K-map in this fashion. So here you will be having Qn, here you will be having SR. So this is a 3 variable K-map. So you will be having 8 cells. So cell number 0, cell number 1, cell number 2, cell number 3, 4, 5, 6 and 7. So to fill up the cells, we have to refer the column of next step. So 0, 0, 1, don't care, 1, 0, 1, don't care. So I am entering the column entries in this cell. So you have 0, 0, 1, don't care, 1, 0, 1, don't care. Okay. And you know about the K-map, you have to have a maximum of group. So here I can have a group, 2 groups I can have. One is this group and the other one is this group. So we have got the characteristic equation. So the characteristic equation for your SR flip-flop will be given as, now as this is a K-map of Qn plus 1, so equation will be in the form of Qn plus 1. So Qn plus 1 is equals to S plus R bar Qn. This equation we have got by using the K-map. K-map we have got by using the characteristic table. That is why this equation is called as characteristic equation. Okay. So Qn plus 1, that is the next state, is related with or is in accordance with S, R bar and Qn. So this is the equation which is called as a characteristic equation. Have you understood this characteristic equation? Am I audible? Yes, sir. Okay. So we will proceed further now. Now, जैसे हमने अभी SR flip flop देखा है, clocked SR flip flop. We have seen the clocked SR flip flop. Similarly, the question may be asked about any type of triggering of SR flip flop. I can have one more, that is a positive age triggered SR flip flop. I'm not going to go into the detail of this. Once you have understood the clocked SR flip-flop, you will also understand the positive age-triggered SR flip-flop. I am going to draw just this, the logic symbol of positive age-triggered. You will understand this. You have SR flip-flop. So this is my SR flip-flop. There are two inputs. Okay. So this is S, this is R. There are two outputs. This is Q and this is Q bar. And important, as this is a positive age triggered, the clock will be shown in this manner. So this is called as a positive age trigger. Now in the truth table, of clocked SR flip-flop, now listen to me carefully what I'm saying. In the clocked SR flip-flop, in the truth table, we have drawn the first column as clock. और वो clock में हमने सबको 1 1 1 1 दिए थे. Yes, it is understood because it is a clocked SR flip-flop. That is a level triggered. Okay, तो आपका आउटपुट आएगा जब आपका क्लॉक हाई है. आपका आउटपुट नहीं आएगा
only because your clock is 0. और अगर आपका clock 0, that means your previous output is stored, it is hold. Okay, now if I have to show that clock in the positive edge trigger, you will be showing with this arrow. You will be showing with the arrow. I'm talking about the first column of truth table, जहाँ पे मैंने क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए 111 किया था. यहाँ पे मैं 11 नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, because this is positive edge trigger, and you know in the positive edge trigger the arrow has to be shown upward. The arrow has to be shown upward. वही अगर negative edge trigger एसआर फ्लिप फ्लॉप रहता था, the arrow has to be shown downward. The arrow has to be shown down. तो नेगेटिव एज ट्रिगर में क्या होता है, जब आपका क्लॉक goes transition from high state to low state, you will have the output. Positive edge trigger में क्या होता है, you will have an output when your clock goes from logic 0 to logic 1. Okay, logic 0 to logic 1. So this is a symbol of SR flip flop, that is a positive edge trigger flip flop. अगर मुझे आपको दिखाना है with the positive edge trigger with the logic basic gates, then you will be showing in this manner. Here also you will see the difference. Here also you will see the difference. This is crisscrossed. This is crisscrossed, and these the two inputs. This is NAND gate 1, this is NAND gate 2, this is NAND gate 3, this is NAND gate 4. Okay, this is S, this is R, this is Q, and this is Q bar. Okay, then see here how do you show the clock. जब मैंने clock SR बनाया था तो just मैंने clock दिया था और यहाँ पे मैंने लिखा था clock. तो जब सिंबल की बात आती है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर कैन बी शोड इन दिस मैनर, और जब निगेटिव एज ट्रिगर की बात आती है तो आई कैन शो विद द बबल, ऐसा ऐसा. ओके, लेकिन ये जो लॉजिक डायग्राम है, by using the logic gate I cannot show the triangle, I cannot show the bubble. So how do you show this? You have to show here by using the wave. And yeah, बस इतना बोल के नहीं चलता, as this is a positive edge trigger you have to show arrow at this point, then it is understood that this is a positive edge trigger, then this clock is a positive edge trigger. अगर आपने clock नहीं दिखा, square wave नहीं दिखा है, then it is understood this is a normal clock pulse. It is a normal clock pulse. That means जब आपका clock high जाएगा you will have an output. You will have an output. Okay. और अगर मुझे negative edge trigger दिखाना है, अगर मुझे negative edge trigger दिखाना है, then you have to show in this manner. You will again draw the square wave and negative edge will be shown in this manner. तब पता चलता है कि during the falling edge of your clock you will have the output. When your clock goes from high to low, when your clock goes from high to low, and if you do not show the square wave, then it is understood that this is a clock pulse during high transition. अगर आपको दिखना है कि during the low level triggering, अगर आपको low level trigger दिखाना है यहाँ पे, then you have to just show the bubble here. बस, you have to show the bubble. I hope you have understood this. Positive edge triggered SR flip flop, and with the different triggering pulses. Have you understood this concept now? Yes, sir. Okay. Now see here. I will not go into the detail of this. Now this is the figure. This is the figure, the logic diagram for the positive edge triggered SR flip flop. Positive edge triggered SR flip flop. The truth table is the same, the characteristic table is the same, the excitation table is same, everything is same, only with the one change that clock आप जो column दिखाओगे, for that column, for every row you will show by this arrow. बस वही change. और अगर negative edge trigger की बात आती है,
everything remains the same. Only with the clock column for every row you will show by the downward arrow. If this is clear, we will proceed further. If this is clear, I will proceed further. Explanation, everything remains the same for the previous explanation for clocked SR flip-flop. So shall we proceed further? सर हाँ, सर जब ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो जीरो को कैसे दिखेंगे? पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो जीरो को कैसे दिखाएंगे? समझा नहीं, फिर से बोलो। वन को हम लोग ये इसको इसके साथ रिप्लेस करते हैं ना, अपवर्ड एरोस के साथ, जीरो के। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात जब आती है तो आपको अपवर्ड एरो दिखाना पड़ता है। निगेटिव एज ट्रिगर की बात आती है तो क्लॉक को आपको निगेटिव दिखाना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर है, इसका मतलब आपका आउटपुट कब दिखेगा? जब आप व्हेन योर क्लॉक विल गो फ्रॉम जीरो टू हाई, और जीरो टू हाई को ऐसा दिखाना पड़ता है। और निगेटिव एज ट्रिगर में आपका आउटपुट कब आता है? जब आपका क्लॉक हाई टू लो जाता है, तो हाई टू लो जाने के लिए आपको ऐसा दिखाना पड़ता है। तो फिर जीरो कैसे रखना पड़ेगा? जीरो कैसे रखना मुझे समझ में नहीं आ रहा। यानी अभी इसमें टेबल में, ट्रूथ टेबल में क्लॉक जीरो भी रखेंगे, मतलब कंडीशन रहेगा ना जीरो हाँ का। हाँ 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 हाँ, बराबर है। तो फिर हाँ, वो एक जो लास्ट वाला कंडीशन उसको डायरेक्ट जीरो ही रख दो, वो वैसे रहेगा। ओके, यस मुझे समझ में आया। आपके जो सबसे लास्ट वाले दो रो है जिसमें आपने यस जीरो रखा है, इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर क्लॉक ही नहीं दिया, यानी उसका मतलब क्या है, मैंने पॉजिटिव एज ट्रिगर के अलावा दूसरा कुछ तो भी दे दिया, या फिर क्लॉक ही नहीं दिया, तो वो कंडीशन में आपके वो लास्ट के दो रो है। अंडरस्टूड ना? यस। हाँ हाँ, ठीक। यस, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? So shall we proceed further now? So you will be doing the homework for positive edge triggered SR flip flop, negative edge triggered SR flip flop, truth table, characteristic table, characteristic equation, and excitation table. Is it fine? Is it fine? Is it fine? Yes, sir. Okay. Now write down the heading as SR flip flop, SR flip flop with preset. This is also very important. SR flip flop with preset and clear. SR flip flop with preset and clear. SR flip flop with preset and clear. This is very important. I want everyone to pay attention. Mostly the questions are asked on this preset and clear. So what do you mean by preset and clear? Try to understand here. Now here when you talk about the SR flip flop, whenever हम जब कभी SR flip flop को whenever you give power, या फिर हम इनिशियली जब SR flip flop को ऑन करते हैं, ओके, जब हम SR flip flop को ऑन करते हैं या फिर उसको पावर देते हैं, या फिर हमको इनिशियली उसको ऑन करना है, तो in that case I do not know what is Q and what is Q bar. What is Q and Q? What is Q bar? Okay, so that is unpredictable. लेकिन अगर मुझे चाहिए कि जब इनिशियली मैं मेरा SR फ्लिप फ्लॉप को ऑन करूंगा या फिर उसको पावर ऑन करूंगा, then in that case my Q should be 1, Q bar should be 0, या फिर मेरा Q should be 0, my Q bar should be 1. If that is what I require, okay, that is what I require. क्योंकि जब हम पावर ऑन करते हैं तो दैट इज अनप्रेडिक्टेबल कि Q क्या रहेगा और Q बार क्या रहेगा. द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज अनप्रेडिक्टेबल. So when in that case, if I want that initial my Q should have some specific value, in that case I will be using this preset and clear input. This is also the two inputs of the SR flip flop. These are the also two inputs of the SR flip flop. Okay, so we will see this two inputs with the symbol, the logic symbol for SR flip flop with preset and clear. See the logic symbol, all of you. This is your SR flip flop. This is your SR flip flop. Your S input, your R input remains the same. Your clock, now I'm drawing the in general clock. See, again I'm saying, unless and until it is defined that your clock is edge triggered or any other triggered, it is by default, this is a normal clock. Normal clock means whenever your clock is high, you will have an output. That is the meaning. So this is a normal clock.
Okay, so SR flip-flop with 2 inputs, 1 clock. You also have 2 outputs, Q and Q bar, Q and Q bar. Okay, and you have a preset and clear. These are the extra 2 inputs. See here what I am drawing here. Here you have a bubble. This is called as a preset, which is also, in short, it is also written as PR, or simple P also you can write, there is no problem. And one more input, that is clear, that is clear. It is given as CR. It is given as CR. Okay, here important thing is that there is a bubble. There is a bubble. There is a bubble. There is a bubble. Now try to understand that when there is a bubble, it means that preset and clear are active low input pins. Clear and preset are 2 active low input pins. Okay, these are the 2 active low input pins. अब इसका क्या मतलब होता है? Whenever I want my that Q initially my Q should have 1 and Q bar should give me 0. Q bar is equals to 1 and Q bar should give me 0. In that case, I will be using these 2 pins, that is preset and clear. I will be using these 2 pins, preset and clear. Now, how do you use this pin? Whenever I want Q is equals to 1, whenever I want Q is equals to 1, you have to give 0 at this preset pin. You have to give 0 at this preset pin. So when Q is equals to 1, then automatically Q bar will be 0. And if I want that initially my Q should give me 0 and Q bar should give me 1, in that case, before going to that case, go to this case when Q is equals to 1 and Q bar is equals to 0. This condition, if you want to achieve initially, then you will give preset is equals to 0 and clear is equals to 1. Clear is equals to 1. Clear is equals to 1. And if I want my Q should give me 0 output and Q bar should give me 1 output, in that case, it is vice versa. My preset will be 1 and my clear will be 0. My clear will be 0. My clear will be 0. Now here it is called as a preset. Preset means pre. Pre is important. Pre bole to, initially I want my Q should be 1. Initially I want my Q should be 1. So that is called as a preset. And as it is an active low pin, प्रीसेट अगर 0 रहेगा तभी आपका आउटपुट में 1 आएगा और क्यू बार में 0 आएगा, और CR शुड बी 1 और CR. नाउ दिस इज अ क्लियर का मतलब होता है कि माय आउटपुट शुड गिव मी 0. नाउ इफ आई वांट माय Q शुड बी 0, the Q should be 0 initially and Q bar should be 1. In that case, clear pin should be 0 because this is an active low. तो clear को 0 दो और preset को 1 दे दो. Then at the output you will have Q is equals to 0 and Q bar is equals to 1. So these are the 2 inputs. Have you understood the concept of preset and clear? Have you understood the concept of preset and clear? Yes or no? Yes, sir. Any question related with the preset and clear? Any question related with the preset and clear? No, sir. Okay. Now see here, this preset and clear, they are the 2 important inputs which will override all other inputs. Now this is very important. Override all other inputs, which will override all other inputs. What does it mean? इसका मतलब क्या है? See here, all of you pay attention. Now suppose I want my Q should be 1. जब मैं मेरा SR फ्लिप फ्लॉप को ऑन करूंगा, मुझे चाहिए कि मेरा Q 1 चाहिए और मेरा Q bar 0 चाहिए. ओके, तो इन दैट केस व्हाट यू विल डू, यू प्रीसेट आप 0 करोगे और क्लियर में आप 1 करोगे. ओके, तो ये जब आप करते हो, irrespective of S, irrespective of clock,
and irrespective of r, you will have q is equals to 1 and q bar is equals to 0. इसका मतलब होता है आपका s कुछ भी रहने दो, आपका क्लॉक कुछ भी रहने दो, आपका r कुछ भी रहने दो, अगर आपका प्रीसेट 0 है और आपका क्लियर अगर 1 है, आपके q में आउटपुट में 1 आएगा और q बार 0 आएगा. Can I say it means that preset and clear, they are also the inputs, but they have overriding power over the S, R and clock. They are overriding. That means they are empowering. They are dominating the other inputs. They are dominating the other inputs. So that is why it is called as preset and clear inputs are overriding all other inputs. All other inputs. Is it clear? So the preset input forces output q is equals to 1 and clear input forces q is equals to 0. Q is equals to 0. And both of them are active low pins. Both of them are active low input pins. Okay, both of them are active low input pins. Whether this concept is clear? Whether this concept is clear? Shall I proceed further? Okay. Now see here, if you want to have to understand this preset and clear more in detail, then we will be showing this by using the logic gates. See the logic gate, all of you. SR का पहले logic gate बना दो. SR का पहले logic gate बना दो. You have already know this SR flip-flop logic gates. Okay, so I am drawing the same thing. So this input, here output, so this is called as a crisscross connection. Here you will have q, here you have q bar, here you will have s, here you will have r, here you will have clock, here you will have clock. Now you will wonder where you will have preset and where you will have clear, where you will have preset and where you will have clear. So your preset is here, your preset is here and your clear is here. Your preset is here and your clear is here. Okay, so these are the two additional inputs as far as your logic gate circuit diagram is concerned. So this is NAND gate 1, this is NAND gate 2, this is NAND gate 3 and this is NAND gate 4. So everything remains the same with the addition of two inputs. One input is here and the other input is here. Okay, now let me tell you one thing. Now your preset and clear will have may have different combinations. For example, आपका PR और आपका CR, okay, will have different combinations. Okay, it may have 0 0, it may have 0 1, it may have 1 0, it may have 1 1. Okay, so it has different combinations. So I am writing down the combinations here. So CR preset and clear, so it may be 0 0, it may be 0 1, it may be 1 0 and it may be 1 1. Now we have to understand this table. Now this is the operation of SR flip-flop by using the preset and clear inputs. Okay, clear and preset inputs. Okay, so these are the inputs. Now we should not forget that there is also clock available, so we will also give the importance to the clock. अभी ये previously जो circuit मैंने बनाया था ये normal clock है. So what I will do, I will assume the clock as 1. I will assume the clock as 1. I will assume the clock as 1. Now we will see here what is going to happen now. Now these are the three inputs we have. These are the three inputs. Now with respect to the three inputs, what is your output? What is our output? Now output is given as q n plus 1. And with respect to this, what is this operation called as? Now we will see this. Okay, we will see this. Now see here now carefully, all of you.
पहले वाला रो छोड़ दो फिलहाल. First row we will skip. First row we will skip. Directly we will go to second row. Tell me when your preset is 0 and clear is 1. Tell me what is the output. हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ One. नीचे खींच One. के जमीन में ना काट दे, क्योंकि कुछ भी Am I right? जॉन अब्राहम बोले The output is 1. The output is 1. Yes. Preset is 0, clear is 1. The output is 1. Okay, fine. Tell me the third row. When your CR is 0 and your preset is 1. Tell me the output. Tell me the output. 0. Yes, it is 0. Now, when your PR is 0 and CR is equals to 1, then your output is 1. Then in that case, can I say flip-flop is set? Flip-flop is set. And when your PR is 1 and CR is 0 and your output is 0, can I say your flip-flop is reset? Yes or no? Yes or no? Yes. हाँ. Now see here, ये दोनों ही केस में मैंने आपको पहले बताया था कि PR और CR are overrider to the other inputs. So in both the cases, can I say whatever the clock, PR 0, CR 1, output 1, flip flop is set. PR 1, CR 0, output is 0, flip flop is reset. Whatever the clock. Okay. Now come to this 1 1 condition. Now whenever you have PR is equals to 1 and CR is equals to 1, can I say as your PR and CR are active low, PR 1 करोगे और CR 1 करोगे तो इसका इफेक्ट नहीं गिरने वाला. Can I comment this? Yes. Yes, I can say because PR and CR are active low, लेकिन दोनों को मैंने 1 1 कर दिया तो इसका इफेक्ट कुछ भी गिरने वाला नहीं है. फ्लिप फ्लॉप पे कुछ भी गिरने वाला नहीं है. ओके, सो इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं गिरने वाला. इसका मतलब ये क्लॉक पे डिपेंड है सिर्फ. दिस दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्लॉक एंड योर SR इनपुट. सो इन दैट केस, इन द नॉर्मल क्लॉक, I will write down here 1 under the normal clock, and your output will be Qn plus 1. यानी वही आउटपुट रहेगा, यानी आउटपुट आपका आएगा डिपेंडिंग अपॉन योर SR, provided your clock is present. So can I comment here the operation is normal SR flip flop? Can I comment that this is a normal SR flip flop? Yes. If PR is equals to 1, CR is equals to 1, it works as a normal SR flip flop. Now under this 0 0, whatever the clock you have, दोनों भी 0 रखना है. इसका मतलब this is unpredictable. So this is unpredictable or it is invalid operation. यहाँ पे मैंने डैश किया है because unpredictable. दोनों भी 0 रखा मैंने and both are active low. तो whatever the clock, कुछ भी दे दो clock, आपका आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल है. So this is invalid operation. I hope you have understood this. Any question related with the preset and clear? Have you understood the table? Yes, sir. Any questions you have? Any query related with this table about preset clear? Sir, can you explain once again for PR CR equal to 0? Okay. See here, let me go to the previous one. Here I have told you the preset and clear, they are active low. Okay. Active low बोले तो अगर वो 0 रहेगा तभी उसका इफेक्ट गिरेगा फ्लिप फ्लॉप पे. अगर 1 है तो उस पे इफेक्ट नहीं गिरेगा. तो मैं जब चाहता हूँ, if I require that Q should give me 1 at the output of SR flip flop, okay, irrespective of SR, I will do one thing, that I will give PR is equals to 0 and CR is equals to 1. Then in that case, your output will be 1. And if I want my Q should give me 0, irrespective of S and R. So in that case, you will make clear CR is equals to 0 and PR is equals to 1. Okay.
So that thing only I have written in this table. That is only I have written in this table. Okay. अब ये पहले वाला रो छोड़ दो. अगर मैंने PR 0 रखा और clear 1 किया तो that is आउटपुट में मेरा 1 आएगा. That means flip flop is set. और अगर मेरा PR 1 है और CR 0 है, that means आउटपुट में मेरा 0 आएगा. That means my flip flop is reset. My PR is reset. My flip flop is reset. And whenever my PR and CR both are 1-1, PR and CR are both are 1-1, that means actually PR और CR दोनों एक्टिव लो है, लेकिन उसको मैंने 1-1 दे दिया. इसका मतलब उसका कुछ भी इफेक्ट गिरने वाला नहीं है फ्लिप फ्लॉप पे. तो इन दैट केस व्हेन बोथ आर 1-1, दैट मीन्स आपका फ्लिप फ्लॉप नॉर्मल ऑपरेशन करेगा. नॉर्मल ऑपरेशन क्या है? आप क्लॉक दोगे और SR इनपुट के हिसाब से आपका आउटपुट आएगा. तो वही जो आउटपुट आएगा वो Qn+1 लिखा है मैंने. दैट मीन्स योर Qn+, दैट इज आउटपुट. योर आउटपुट डिपेंड्स अपॉन योर SR as well as with your clock. Okay, so it is a normal clock, so I am keeping a clock as 1. Now come to this 0-0. अभी मुझे बताओ, अगर दोनों भी एक्टिव लो है और दोनों को मैंने 0 दे दिया, अगर मैंने दोनों को भी अगर 0 दे दिया तो द आउटपुट इज अनप्रेडिक्टेबल. मुझे पता नहीं आउटपुट में क्या आएगा. मुझे एक बात पता है कि अगर PR 0 है और CR 1 है तो आउटपुट में 1 है. मुझे ये भी पता है कि अगर PR 1 है और CR 0 है तो आउटपुट में 0 है. लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दोनों को भी अगर मैंने 0-0 दे दिया, बिकॉज दे आर बोथ आर एक्टिव लो, सो आई डू नॉट नो. सो irrespective of your clock, your output is unpredictable. So you can write down here unpredictable or dash, and that operation is called as invalid. That operation is called as invalid. अभी समझे आपको? Yes, sir. हाँ. So that is the PR 0, CR 0. This is not allowed. This condition is uncertain. Okay, this condition is uncertain and this condition should be avoided. वैसे देखा जाए तो this condition should be avoided. तो हम तीनों ही इसमें काम कर सकते. ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, बस हम ये तीनों में ही काम कर सकते. ये कंडीशन हमने अवॉइड करनी चाहिए because this gives you unpredicted output. Okay, this gives me unpredicted output. Just give me 1 minute. Okay. यस, मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. So we will proceed further now. So we have understood the precedent clear inputs. What are their significance? Okay, we have seen the block. We have seen the
logic symbol. We have seen the circuit diagram by using the logic gates. We have also seen the table. Now we are proceeding further to understand the other flip flop, which is called as a JK flip flop. Please write down JK flip flop. Write down JK flip flop. So we have covered SR flip flop in detail now. We are studying now JK flip flop. JK flip flop. Now to understand this JK flip flop, this is just a slight modification of your SR flip flop. This is a slight modification of your SR flip flop. Okay. Now what is that slight modification? We will see now. What is a slight modification? We will see. We will see first the logic diagram by where you will see the JK flip flop, clock flip flop using SR flip flop. Okay, we will see that because I have told you that this is a slight modification of SR flip flop. So what is that modification? See here. Now this is your SR flip flop. See the modification. This is your SR flip flop. So here you will have Q. Here you will have Q. Here you will have Q bar. Here you will have Q bar. Here you will have two inputs. But hold on for some time. ये inputs क्या है? We will see. We will see the inputs. Okay. And these inputs are given through the AND gate. This is given through the AND gate. This is given through the AND gate. Okay. And see the input. This is AND 1 and this is AND 2 and this is AND 2. And see the inputs. There are three inputs. One input is actually the J. The other input for this is K. The other two inputs are clock. And you have third input. See the third input now properly. See the third input. Third input is given from Q bar, and this input is given from Q. So this is the modification of SR flip flop. Can I say this is a modification of SR flip flop to give you JK flip flop? Yes, this is the modification. And if you see carefully, at the output of AND 1, you will have S is equals to J Q bar. And here you will have R is equals to K Q. So this is your JK flip flop with the modification on the SR flip flop. Any question in this? Any question in this? No, sir. Yes. So this S is equals to JQ bar and R is equals to KQ. These are the actual inputs given to SR flip flop. These are the actual input given to the SR flip flop. So whenever this SR flip flop में जो input दे रहे हैं हम, you will see there is J, there is K. Where is J? J is here. Where is K? K is here. Okay. So that is why S is equals to JQ bar and R is equals to KQ. So this is the modification on the SR flip flop to give you JK flip flop. If you want to see by using the logic gates, please see here now. You have NAND gate. This is the other NAND gate. You have one more NAND gate. And here also you have one more NAND gate. Okay, now see here. This is NAND gate 1, this is 2, this is 3, this is 4. Okay, so the output is Q. Here it is Q bar. And see what is happening now. Crisscross connection. So output, this is given here. And here it is crisscross connection. Okay, crisscross connection. For these
NAND 3, here you have J. For NAND 4, here you have K. Here you have K. The clock are given at this point. Here you will have clock. Here you will have clock. And the last third input, the third input is taken from here and from here. So this is important. This is important. This is important. So this is your JK flip flop by using the logic gates. By using the logic gates. This is a normal clocked JK flip flop. This is a normal clocked JK flip flop. ओके और वही अगर आपको डायरेक्टली उसका सिंबल दिखाना है, जैसे एसआर के लिए हम सिंबल दिखाते हैं, तो वही यहाँ पे एक सिंबल रहेगा, जेके फ्लिप फ्लॉप रहेगा, दो आउटपुट्स रहेंगे, this is Q bar, and you will have two inputs J and K. You will have two inputs and one clock. So this is the normal symbol. This is a normal logic symbol for JK flip flop. Okay, for JK flip flop. Now here we have to understand that J stands for set and K stands for reset. J stands for set and K stands for reset. ये क्यों हमने ऐसे लिखा? Because for S you have written J into Q bar, and for reset you have written R is equals to K dot Q. Okay, so because of this we can say that J is used to set and K is used to reset. J is used to set and K is used to reset. Okay, so input J and K behave as behaves as S and R inputs to the SR flip flop. Okay, SR flip flop. अभी JK का importance क्या है? What is the importance of JK flip flop? The importance of JK flip flop is, see here now. All of you pay attention. This is very important. The questions are asked. Viva में भी पूछा जाता है. So you should know this. What is the advantage of this JK flip flop? Now tell me, in your normal SR flip flop, tell me when S is equals to 1 and R is equals to 1. What is the output? Any one of you? Fast. When S is equals to 1, R is equals to 1. Invalid. Invalid. It is invalid. It is invalid. It is invalid. So this S is equals to 1, R is equals to 1 can be overruled or can be make valid in JK flip flop. In JK flip flop. इसका मतलब क्या है? S is equals to 1, R is equals to 1, which is invalid in SR flip flop, can be implemented in JK flip flop, where you will have J is equals to 1 and K is equals to 1. But in this case, it is not invalid. It is not invalid. But J is equals to 1 and K is equals to 1. This particular input where J is equals to 1 and K is equals to 1, you will have some specific state, and that specific state is called as toggle state. That specific state is called as a toggle state. So we will see what do you mean by toggle. Okay, so this is the advantage of JK flip flop, that S is equals to 1, R is equals to 1 is an invalid state in the SR flip flop. To overcome that invalid state, we can have the toggle state by using J is equals to 1 and K is equals to 1. J is equals to 1 and K is equals to 1. So how that is achieved, we will see by the truth table. मैंने फिर से बताया, truth table क्या करता है? Truth table बताता है different combinations of input and its corresponding output. So we are here to understand the truth table of JK flip flop. So I want everyone to pay attention. This is important if you want to understand properly. See, if you have understood SR, you will understand JK also. See here, all of you. First, I will write down the inputs.
I'm see what हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं क्लॉक JK फ्लिप फ्लॉप का, हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं. ओके, सो हियर वी हैव इनपुट्स, then in the input, then we have the output, then we have input to SR flip flop, and then the name of the state, then the name of the state. So under the input, I have to write down the clock also. The clock is important, so I will not leave the clock. Clock is there. Then along with the clock, you have J, you have K, and you have K. Okay, so these are the two inputs. Sorry, three inputs. Clock, J, K. Then outputs, you have Qn, you have Qn bar. अब यहाँ पे Qn बार भी लेना जरूरी है. क्यों लेना जरूरी है सीयर? Qn बार भी लेना क्यों जरूरी है? Because of this. In the equation you have Q bar. इसलिए Q bar भी लेना जरूरी है. Okay, so I have taken Q bar column also as an output. Then what output I can take? The other one is Qn plus 1. So these are the three outputs I have taken. And input to SR flip flop, I will directly write down here S and R, and then we can have the different states. We can name the different states. Now this truth table we have to complete by using this particular diagram, okay, by using this particular diagram. So this thing I will leave to you for verification. हम directly truth table बनाते हैं so that you will be able to understand. So हम directly truth table बनाते हैं. So pay attention, all of you pay attention now. Now we have to see the different combinations. जैसे हमने SR के लिए बनाया था वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे JK000 when present state is 0 and if present state is 1, and in both the cases if clock is present. Now this is a normal clock JK flip flop, normal clock, so 1 1. Now we have to understand if J is equals to 0, K is equals to 0, if present state is 0 and if present state is 1, what is the next state? Qn plus 1. वो Qn प्लस करने के पहले मैं डायरेक्टली पहले ये लिखता हूँ, ये अगर 0 है तो ये 1 है, और अगर ये 1 है तो ये 0 है. ओके, तो ये है. Now I want Qn plus 1. Now see here, J is equals to 0 and K is equals to 0. I want Qn plus 1. Can any one of you tell me what is Qn plus 1? We will go to the we will go here now. Okay, we will go here. Now here you have to understand, if your J is equals to 0, K is equals to 0. J is equals to 0, your K is equals to 0. What is your Qn plus 1? Yes, tell me. यहाँ पे ये इक्वेशन लो, J is equals to 0 रख दो. आपके पास J है, आपके पास Q है, सॉरी Q बार है. यहाँ पे आपके पास K है और आपके पास Q भी है. ये रखने के बाद मुझे बताओ S क्या है यहाँ पे? 0. वेरी गुड. R क्या है यहाँ पे? 0. वेरी गुड. मुझे बताओ अभी नॉर्मल SR फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों भी 0 0 है तो क्या है? Invalid. 0 0. कौन सा स्टेट है वो 0 0? SR No flip flop. change. Yes. No change. वेरी गुड. नो चेंज का मतलब यहाँ पे ऐसा कर सकता हूं मैं. नो चेंज का मतलब 0 0 वैसे के वैसा, 1 वैसे के वैसा.
Yes or no? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. In general, can I say Qn? In general, can I say Qn? Yes? Yes? जल्दी Yes. रेस्पॉन्स किया करो. Yes, यस. sir. Yes, हाँ. sir. तो अभी S क्या है और R क्या है वो इक्वेशन यूज करो तो मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो. व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट? नो चेंज. नो चेंज. तो पहला वाला काम हो गया. पहले वाला काम हो गया. नेक्स्ट वन. अब JK 00 का काम हो गया. अब JK 0101 जब Q1 0 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा और जब Q1 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगा. और बोथ द केसेस में अगर क्लॉक प्रेजेंट है कंप्लीट द टेबल. कंप्लीट द टेबल. अब यहाँ पे 0 है तो मुझे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 है तो 0 लिखना पड़ेगा. प्लीज टेल मी द Qn+1. यूज दिस पर्टिकुलर फिगर. यस, बताओ. I am waiting for your answer. The figure is in front of you. For J is equals to 0, for K is equals to 1, for Qn is equals to 0, for Qn bar is equals to 1. Tell me what is Qn+1. No change. मुझे सिर्फ बताओ, मुझे वो टेबल कंप्लीट करना है. Yes. मुझे सिर्फ टेबल कंप्लीट करना है. 1 1. Qn+1 is 1 1. Are you sure? 0 है ना? 0 0. अभी इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था. आपका JK is nothing but it is the modification of SR flip flop. Yes. मैंने ये भी बताया था कि J is used as a set and K is used as a reset. अभी यहाँ पे देखो दोनों इसमें K is equals to 1 है ना, तो it is a reset condition. reset condition में आउटपुट क्या आता है? 0. 0. Yes. In general, can I say it is 0? Yes or no? Yes. हाँ. अभी ये इसके लिए बताओ S और R क्या है? For third row, it will be both 0. ये कहां से लिख रहा हूं मैं? S का इक्वेशन और R का इक्वेशन. So both will be 0. नीचे वाले रो में बताओ क्या लिखूं? 0. S क्या है और R क्या है? I want answer from you fast. Use this equation. S is equals to JQ bar and R is equals to 0 हाँ बताओ क्या है? एक बार 0 0 फिर दूसरे बार 0 1. हाँ यहाँ पे आएगा 0 1. वेरी गुड. 0 0 1. वेरी गुड. टेल मी द नेम ऑफ द स्टेट. Reset. वेरी Reset. गुड. रीसेट. वेरी गुड. ये भी हो गया. प्रोसीड फर्दर. When it is 1 0 1 0, when input when present state is 0, what is the output? And when present state is 1, what is the output? When the clocks are available. When the clocks are available. तो यहाँ पे मैं 1 लिखता, यहाँ पे मैं 0 लिखता because it is Qn bar. Tell me fast. J 1 1. हाँ 1 1 because it is a reset. Sorry, it is a set condition. So 1 1. It is a set condition. In general, it is 1. In general, it is 1. This is 1. This is 0. So I am not wasting my time. आप जल्दी आंसर नहीं दे रहे हो. I am writing it down. 1 0 0 0. You can cross check. This is a set condition. This is a set condition. Now the important row. Now the important row. Please pay attention now. When J is equals to 1, K is equals to 1. J is equals to 1, K is equals to 1. When present state is 0, what is the next state? When present state is 1, what is the next state? When both the clocks are available. When both the clocks are available. अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो. This is important. This is important. अभी Q1 0 है 1 है तो मुझे पता है ये 1 है, ये मेरा 0 है. अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए Qn+1. Qn+1. So for J is equals to 1, K is equals to 1.
for Q1 is equals to 0 and Qn bar is equals to 1, use tell me by using this formula, can any one of you tell me what is Qn plus 1? What is Qn plus 1? What is Qn plus 1? मैं यहाँ पे लिखता हूं, your j is equals to 1, your k is equals to 1, your Qn is equals to 0 and your Qn bar is equals to 1. बताओ, पहले मुझे बताओ s क्या है, s क्या आएगा, s क्या आएगा, s क्या आएगा? 1. 1. 1. वेरी गुड, 1. मेरा अभी बताओ r क्या आएगा? 0. 0. 0 आएगा. वेरी गुड, 1 और 0. बताओ जब मेरा s इज इक्वल्स टू 1 है, r इज इक्वल्स टू 0 है, आउटपुट में क्या आएगा? ये एसआर फ्लिप फ्लॉप. हाँ, Set. सेट, इट इज सेट कंडीशन. आउटपुट में क्या आएगा आपका? Bar. 1. एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, sir. हाँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा. किधर 1 लिखना है? 1 लिखना है इधर, ये इधर, इधर. तो ये हो गया. अभी नीचे का रो बाकी है. नीचे का रो में क्या है? फिर से वही बात, j इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पे सिर्फ अभी क्या रहेगा? Q1 अभी आपको 1 लेना है और Qn बार आपको 0 लेना है. अब मुझे बताओ s क्या है? s क्या है? s क्या है? 0. वेरी गुड. r क्या है? 1. वेरी गुड. तो s जब 0 है, r जब 1 है, कौन सा कंडीशन? Reset. रीसेट. आउटपुट में क्या आएगा? 0. 0. 0. वेरी गुड. आउटपुट में आएगा 0. ये देखो, आउटपुट में मैंने 0 लिखा. अभी जनरल क्या लिखूं बताओ? जनरल क्या लिखूं? जनरल के लिए ये देखना है, ये इधर क्या हो रहा है और ये 1 का क्या हो रहा है. 0 का हो रहा है 1. Yes, very Qn good. bar. It is Qn bar. Very nice. This is Qn bar. And this is called as a toggle. This set is called as a toggle. Toggle बोले तो 1 का 0, 0 का 1. Toggle बोले तो 1 का 0, 0 का 1. So this is called as a toggle. This condition or this state is called as toggle. This condition is called as toggle. So by using SR equation, you can write down 1, 0, and this is 0 and 1. This is as per the equation of SR. So this state is important. So we have achieved this state where j is equals to 1, k is equals to 1. Initially s is equals to 1, r is equals to 1 was invalid. लेकिन वो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? j is equals to 1, k is equals to 1, उसका फायदा हो रहा है. वो क्या हो रहा है कि टॉगल हो रहा है. वो टॉगल हो रहा है. प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में टॉगल हो रहा है. प्रेजेंट स्टेट 0 तो नेक्स्ट स्टेट 1, प्रेजेंट स्टेट 1 तो नेक्स्ट स्टेट 0. ये हो रहा है. ओके. अभी लास्ट वाला वही कंडीशन, अगर क्लॉक 0 है और जे के कुछ भी दे दो, Q1 एक बार 0 है. एक मिनट, इसको ऊपर लेके जाता हूं. हाँ, सो Q1 0 एक बार है, 1 एक बार है. ओके, तो इसका ये Qn बार 0 1 और ये 0. तो मुझे बताओ, अगर आपका क्लॉक नहीं प्रेजेंट है और आपका जे के कुछ भी रहने दो, टेल मी द नेक्स्ट स्टेट. टेल मी द नेक्स्ट स्टेट. टेल मी द नेक्स्ट स्टेट. तो ये जो लास्ट वाला जो रो है ना, जो लास्ट वाला जो रो है, इन विच आपका क्लॉक अगर अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब वो प्रीवियस वाला स्टेट वही रखता है. प्रीवियस जब क्लॉक में 0 करता हूं ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. आपका क्लॉक जब आप 0 करते हो, 0 करने के पहले जो स्टेट था वो रिटेन होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 0 ही रहेगा और 1 1 ही रहेगा. फिर से मैं बता रहा हूं, जब आप क्लॉक 0 करते हो, 0 करने के पहले का जो स्टेट होता है वो रिटेन होता है.
तो तो जीरो, जो अगर प्रेजेंट स्टेट जीरो है तो नेक्स्ट स्टेट जीरो रहेगा, प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 रहेगा. So that is the meaning. And in this case, your S and R will be 0. Here it will be 0. The name of the state is no change. The name of the state is no change. Sorry. The name of the state is no change. Have you understood this table, truth table? Have you understood this truth table? I'm waiting for your response. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So with this, can I make a summary table? So that summary table would be input and output. Input and output. Input is JK. Input is JK and output is QN plus 1. So you will tell me JK है तो 0 0 0 1 1 0 1 1. Tell me complete the table. When J and K both are 0 0, I will give you this table. Tell me in general what is next state. What is next state? What is next state? When J, K both are 0, tell me the next state. What is Qn plus 1? QN. Yes, Qn. So I can write down the next state is Qn. Similarly, when JK both are 0 1, 0 1 देखो यहाँ पे 0 1. Tell me what is Qn plus 1? 0. Very good, 0. So next state is 0. When your previous state, when your JK is 1 0, tell me your next state. 1. 1. Very good. It is 1. And when your JK both are 1 1, your next state is QN bar. Qn bar. Qn bar. So here you have Qn bar. Here you have Qn bar. Here you have Qn bar. So can I say I am going to comment something? Acha, I will ask any one of you. If I ask you to comment something about this table in relation with the SR table, in relation with the SR table, can any one of you comment? It's very simple. No invalid condition. No invalid condition. Very good. So instead of invalid condition, you have toggle state. बराबर है? You have toggle state. Am I right? So can I say 1 2 3? ये SR में भी सेम ही है. SR में भी सेम ही है. Can I comment this? Can I comment this? Yes. Yes, sir. हाँ, लेकिन SR में ये स्टेट इनवैलिड है, लेकिन JK में ये स्टेट टॉगल है. Can I comment this? Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes. So this is about your JK flip-flop. This is about your JK flip-flop. If you have to cross-check your truth table, you have to refer this. You have to refer this if you want to cross-check your truth table. If you want to cross-check, you have to refer this. You cannot refer this. You can refer this, but it's better if you go with this particular circuit diagram. Okay, this will give you the better understanding. Okay, so we have done with this now. Now we have to understand. The characteristic table. Now we have to write down the characteristic table. So see the characteristic table, all of you. Pay attention. I am going to draw the characteristic table. आपको पता है characteristic table में क्या होता है? You have the present state. Then you have the inputs. That is input J and K. And you have the next state. Present state is your Qn and next state is your Qn plus 1. So this is your characteristic table.
So if this is a condition, you will go from 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. So you will tell me fast now. When present state is 0 and if jk is 0 0, tell me the next state fast. Fatafat. Now you have understood everything. पूरी महाभारत आपको बताई, पूरा रामायण बताया आपको अभी मैंने. 0 फटाफट बताओ. When jk is 0 1 and if present state is 0, tell me the next state. 0. 0. If jk is 1 0 and present state is 0, tell me the next state. 1. 1. Right. If jk is 1 1 and if present state is 0, tell me the next state. 1. 1. Very good. If jk is 0 0, if present state is 0, tell me the next state. Present state is 1. 1 1. It is 1. तो 1 है. 1 है बराबर. If jk is 0 1 and if present state is 1, tell me the next state. 0. Very good. If jk is 1 0, present state is 1, tell me the next state. 1. Very good. If jk is 1 1, present state is 1, tell me the next state. 0. 0. Any question? ये सिर्फ याद रखना. 1 1 यानी टॉगल बोले तो 0 का 1, टॉगल बोले तो 1 का 0. ये सिर्फ याद रखना और बाकी एसआर के जैसे काम करेगा. Any question? Shall I proceed further? Any question you have? Any question? No, sir. No. Now this is your characteristic table. Can you get the characteristic equation? Yes, we can get the characteristic equation. We want the characteristic equation for next state. So I want the k map for qn plus 1 and use the variable qn, j and k. So your k map is this. So your k map will be this. Your k map will be this. So it is a 3 variable. So 3 variable means you will have 8 cells. You will have 8 cells. Okay. So this is a k map. K map for qn plus 1. Qn plus 1. You have 3 variables. 3 variables is qn here and jk here and jk here. So you can go with this. You will take the variables 0 0 1 1 1 0 1 0 from here and you will enter into the cell. Okay, so I'm writing down here cell number 0 1 2 3 4 5 6 7. So enter the numbers. I'm going to enter the number 0 0 1 1 1 0 1 0. So see the cell, see the the grouping. This one will go with this one and this one and one will go together. So ultimately tell me the equation fast. qn plus 1 equals 2. Batao. qn plus 1 equals 2. I'm waiting for your answer. 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1. अभी बताओ. K bar qn. K bar qn. हाँ, K bar qn. J qn bar. Plus J qn bar. You are right. J qn bar. Right. So this is the characteristic equation for JK flip-flop. This is a characteristic equation of JK flip-flop. Okay. This is a characteristic equation for JK flip-flop. We will proceed further. Now we will see the excitation table. Excitation table.
Now in this excitation table of JK flip-flop, you know present state, next state, and the required inputs. So I'm going to write down here present state, then you have next state, and the required inputs. Here you will give me the answers. You will complete the table. So present state is given by Qn. The next state is given by Qn plus 1. The required inputs are J and K. So you will give me the answer now. For for present state next state, the combinations are 0 0, 0 1, 1 0 and 1 1. बताओ अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट अगर 0 है, तो जेके क्या हो सकता है? थिंक एंड टेल मी. प्रेजेंट स्टेट 0 और नेक्स्ट स्टेट 0, ये कौन से जेके के इनपुट्स पे आपको ये कंडीशन आती है? प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट में वो 0 ही है. टेल मी फास्ट. 0 don't take. ओके 0. अच्छा ठीक है, पहले मैं लेता हूं 0 और K1. 0 J0 है, K1 है. ये कौन सा स्टेट है? J0 K1, ये कौन सा स्टेट है? रीसेट में देखो Qn plus 1 0 है, बराबर है. और एक बार अगर J0 है और K अगर 0 है, दोनों 0 है, ये कौन सा स्टेट है? J भी 0 और K भी 0, ये कौन सा स्टेट है? No change. नो चेंज बोले तो पहले 0 था और बाद में भी 0 है. पहले 0 था, बाद में भी 0 है. So J will be 0 and K will take any of the value. So instead of writing 1 and 0, I will say don't care. K can take any of the value. K can take any one of the value, but J should be 0. You are right. Now tell me, if present state is 0, the next state is 1. Tell me under what required inputs you will have JK value. I am waiting for your answer. लॉजिक, जरा सा लॉजिक लगाओ, मुझे बताओ जेके रिक्वायर्ड इनपुट्स क्या रहेंगे? 1 and don't care. 1 and don't care. गुड. पहले मैं लेता हूं 1 और बाद में मैं पहले लेता हूं J1 और K सपोज 0. 1 और 0, ये कौन सा स्टेट है? सेट में देखो नेक्स्ट स्टेट आपका 1 है, तो बराबर है J1 K0. और अगर नेक्स्ट कंडीशन में अगर J1 लिखता हूं मैं और K सपोज 1 लेता हूं, तो J भी 1 और K भी 1, ये कौन सा स्टेट है? टॉगल. बराबर है. प्रेजेंट में 0, तो देखो टॉगल होके वो 0 का हो गया 1, तो टॉगल. तो J and K will take 0 or 1. So in better I will write down 1 don't care. You are right. 1 don't care. Now tell me, if present state is 1, the next state is 0. Tell me under what required inputs J and K value will be. Think over this and let me know. Don't care and 1. Don't care and 1. Okay, that is right. Don't care and 1. तो पहले मैं लेता हूँ J is equals to 0 और K is equals to 1. बताओ कौन सा स्टेट है ये? J is equals to 0, K is equals to 1. Reset. It is a reset. देखो नेक्स्ट स्टेट रीसेट वाला है, तो इसलिए वो 0 है. ओके, अंडरस्टूड. अगर मैं लेता हूँ J is equals to 1 और K is equals to 1, which state? Toggle. 1 का हो गया 0. So that is right. So J can take either of the value. So in general, I will say don't care and 1. So for the last one, when present state is 1 and the next state is also 1, tell me the JK inputs. Don't care 0. Okay, don't care, that is right. Don't care 0. तो पहले अगर मैं 0 J लेता हूँ और K भी 0 लेता हूँ, कौन सा स्टेट है ये? No change. नो चेंज.
वन भी है और नेक्स्ट में भी वन ही है, तो देयर इज नो चेंज, यू आर राइट। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं J1 लेता हूँ और K0 लेता हूँ, ये कौन सा स्टेट है? Set. सेट वाला, हाँ बराबर है। ये देखो नेक्स्ट स्टेट में सेट है तो वन है, तो दैट इज राइट। सो J विल टेक एनी ऑफ द वैल्यू, इन जनरल आई विल से डोंट केयर, सो डोंट केयर 0, डोंट केयर 0। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। I hope you have understood this. Before I proceed further, do you have any questions? Any question you have? सर हाँ बोलो। तो जेके का एक बार ट्रुथ टेबल दिखाना। अच्छा, JK का ट्रुथ टेबल, ये वाला, यस हाँ तो इसमें आउटपुट ये 0 1 जब है तब ये आउटपुट दोनों 0 0 कैसे आया? ये देखो J0 और J0 और K1, ठीक है, J0 और K1 जब प्रेजेंट स्टेट 0 है, जब प्रेजेंट स्टेट 0 है Yes, तो J0 K1 ये कौन सा स्टेट है? ये कौन सा स्टेट है? ये है रीसेट वाला स्टेट। सर इसके हिसाब से समझा मुझे, मतलब सेट रीसेट के हिसाब से समझा, लेकिन हाँ। डायग्राम के हिसाब अच्छा से डायग्राम की सबसे नहीं, फिर वो आपको खुद को करना है, इसलिए मैंने पहले बताया था, क्योंकि वो सिखाने को और ज्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आपको, हाँ इसलिए मैंने आपको, सी यू हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन बट because of time constraint I won't be able to explain you in detail, so for that I have asked you to cross verify the truth table by using this particular figure, by using this particular figure, then you will be able to understand. यस Okay, okay, any more questions? किसी को कुछ डाउट है और? Any question, any query? हाँ या ना? No, sir. Okay, no, we will proceed further. Next lecture कितने बजे? सर ब्रेक है। ब्रेक है, ठीक है। मैं 12:15 तक लूँ, चलेगा ना? यस सर। Yes, sir. Now please write down the heading. We will talk about the condition which is called as race around condition. Race around condition. This is important. Questions are asked. Questions are asked on this. Race around condition. Race around condition. Okay. Are you there with me? सब लोग हैं? यस यस सर। Okay. So here, when you talk about the race around condition, this is a condition, and when is this condition arised? ये condition कब आती है? This condition comes when your J is equals to 1 and K is equals to 1. तो मुझे बताओ, जब J is equals to 1 है और K is equals to 1 है, that state is Toggle. टॉगल। यस, अब ये टॉगल में क्या होता है? देखो ये टॉगल में क्या होता है, टॉगल में क्या होता है, आउटपुट में 1 है, सॉरी टॉगल, हाँ टॉगल में क्या होता है, अगर 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0, और अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1, और जब तक आपका K और J दोनों भी 1 है तब तक ये होते रहता है। क्या होते रहता है? मैं फिर से बता रहा हूं, ये सपोज आपका JK है, ये आपका Q है, ओके, आपका आपने क्लॉक दिया है, और J आपका 1 है और K आपका 1 है, तो जब तक आपका J 1 है और K 1 है तब तक बोलूं क्या होता है, तब तक आउटपुट में 1, बाद में फिर 0, बाद में फिर से 1, बाद में फिर से 0, बाद में फिर से 1, बाद में फिर से 0, एंड दिस गोज ऑन एंड दिस गोज ऑन एंड दिस गोज ऑन। ये क्यों हो रहा है? ओनली बिकॉज J 1 है और K 1 है, क्योंकि ये टॉगल करता है। टॉगल क्या करता है? Q1 और Qn प्लस 1, Qn 0 है, Qn प्लस 1 1 हो गया। अभी ये Qn प्लस 1 जो 1 है ना, दैट बिकम्स द प्रेजेंट, तो वो ये प्रेजेंट हो जाता है, फिर नेक्स्ट बार वो 1 का हो गया 0। अब ये जो 0 है ना, ये प्रेजेंट हो जाता है, तो ये 0 प्रेजेंट हो गया, फिर से नेक्स्ट बार क्या होता है, वो नेक्स्ट आउटपुट में ये 1 होता है।
and this goes on. 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. This goes on. So this condition is called as race around condition. Can anyone of you tell me what is the literal meaning of race around? Race around. गोल गोल भागना. हाँ, गोल गोल भागना. और ये म्यूजिकल चेयर में आप लोग गोल गोल घूमते रहते हो कुर्सी के म्यूजिकल चेयर में. सो रेस अराउंड मीन्स घूमते रहो. किसमें घूमते रहो? 1 0 1 0 1 0 1 0. So that is why this, when j is equals to 1, k is equals to 1, you will have the race around condition. So how do you overcome this problem? Now this, अच्छा पहले बताओ रेस अराउंड कंडीशन सबको समझ में आया? Yes. Everyone has understood the race around condition? Yes, sir. No one from girl side saying yes or no? Yes, sir. और दो लड़कियों ने हाँ बोलना चाहिए या नो बोलना चाहिए? Yes, sir. और एक लास्ट. One more girl should say yes or no. So in my today's lecture only 2 girls are there. No, sir. हाँ, तो third girl says yes. Understood the race around condition? I'm not able to hear you. Okay, so I am assuming you have understood the race around condition. Now the next step is how do you overcome this race around condition? So to overcome this race around condition, now let me tell you one more thing. आपका तो J और K, let me go, yes. मैंने आपको क्या बोला था कि when till your J and K are 1, you will have this race around condition. Can I add one more thing in this? Along with J and K, both are 1. Also, when your clock is 1, इसका मतलब क्या है? जब तक आपका क्लॉक हाई है, उसका मतलब क्या है? सी ना, ये मेरा क्लॉक है, तो जब तक आपका क्लॉक हाई है और आपका J इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 1 है, फिर से वही बात, जब तक आपका क्लॉक हाई है और आपका J इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 1 है, फिर से जब तक आपका क्लॉक हाई है और आपका J इज इक्वल्स टू K इज इक्वल्स टू 1 है, तब तक आपका टॉगल होता है, तब तक आपका आउटपुट टॉगल होता है. तो with respect to this, can I draw the toggle output? See, all of you pay attention here, this is important. देखो अभी मेरा टॉगल क्या हो रहा है? 1 0 1 0 1 0 1 0. जब तक आपका क्लॉक नहीं है तब तो आउटपुट नहीं आएगा. फिर से J और K 1 है और फिर से क्लॉक अवेलेबल है, फिर से टॉगल 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. फिर से आपका क्लॉक नहीं है, देन अगेन 1 0 1 0 1 0. Have you understood this timing diagram? Yes or Yes. no? हाँ, तो along with J is equals to K is equals to 1, it also depends upon your clock pulse. आपका क्लॉक कब तक हाई है, Okay, so if the question is asked race around condition क्यों होता है, तो there are 2 reasons. Because the reason number 1, J and K both are 1, as well as the duration of the clock. The duration of the clock बोलने से अच्छा, to be more specific, the on time of the clock. तो ये on time अगर ज्यादा है तो आपके रेस अराउंड कंडीशन ज्यादा है, 1 0 1 0 1 0 1, and this will go on. So the remedy for this
the remedy for this, so we can solve this problem by either of the three methods. This can be solved by either of the three methods. See the method. The first one is your TP should be less than or equal to T. Okay, your TP, अब यहाँ पे क्या है, 2 times tau, this is a tau less than T. I will not explain this in detail, but I will just show you that if you are on time, so your on time is this is your TP. So this TP period should be small. This TP period should be small. And it should be less than 2 tau less than capital T. What is the capital T? The on time plus off time. Though this is a capital T. Okay, तो आपका अगर on time TP अगर कम है, तो you will avoid race around condition. You can avoid race around condition. So the first one is this. That your on time of clock should be of the range of less than 2 tau less than capital T. So this is your first remedy. What is the second remedy? The second remedy is using age triggered JK flip-flop. This is very important. Try to understand. Age trigger मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव एज ट्रिगर रहे या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर रही है. सीयर, अगर मैं पॉजिटिव एज ट्रिगर की बात कर रहा हूं, सीयर दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर. अगर आपका आउटपुट क्लॉक, अगर आपने क्लॉक दिया है पॉजिटिव एज ट्रिगर का या फिर नेगेटिव एज ट्रिगर का, कैन यू सी हियर, आपका क्लॉक सिर्फ इतने ड्यूरेशन के लिए ही ऑन रहता है. सो इट इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड योर क्लॉक इज प्रेजेंट, and that fraction of second is sufficient to give you the output. So can I say, if I give edge trigger, either positive edge trigger or negative edge trigger, you will avoid race around condition. Do you agree with this or not? Using edge trigger JK flip-flop. Am I audible to everyone? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Do you agree with this? एज ट्रिगर क्या है? इसका मतलब क्या है? आपका जब क्लॉक, आप ये जो बनाते हो ना, सपोज ये जेके है, जेके फ्लिप फ्लॉप है, और आप उसको क्लॉक देते हो, सपोज एज ट्रिगर है, तो मुझे एज ट्रिगर के लिए ऐसा बनाना पड़ता है. और यहाँ पे ये कौन सा एज ट्रिगर है? ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है. तो मैंने बताया था कि आप जब ऐसा बनाते हो तो इट इज अंडरस्टूड. या फिर आपको अगर बताना है स्क्वायर वेव से, तो आप ऐसा बताते हो, ऐसा, और ऊपर सिर्फ ये ऊपर दिखाते हो एरो ऐसा. इसका मतलब आपका आउटपुट अवेलेबल है क्यू whenever you have positive edge trigger, whenever you go from logic 0 to logic high, your output is available. Again, for this second clock, whenever you go from low to high, your output is available. Okay, तो अगर क्लॉक ड्यूरेशन आपका बहुत ही छोटा है, तो रेस अराउंड कंडीशन आप अवॉइड कर सकते हो. Okay, so this is your second remedy. And the last remedy is using master and slave JK flip-flop. Okay, so this is also important. By using the master and slave JK flip-flop, we are going to avoid race around condition. And how is that possible? For to understand that properly, I want everyone to draw this small diagram. See here, please draw this. This is your J.
JK master. This is your master JK flip flop. This is your master JK flip flop. You have the मास्टर स्लेव का मतलब होता है एक दो मास्टर एक जेके फ्लिप फ्लॉप है और स्लेव दूसरा वाला है, स्लेव और मास्टर. ओके, सो मास्टर एंड दिस इज योर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप. ओके, सी हियर द मॉडिफिकेशन. यहां का आउटपुट क्यू विल बी गिवन एज द इनपुट टू दिस जे, और यहां का जो क्यू बार है that is given as the input to this K. इसका जो output है Q, and here we have output as Q bar. So these are the outputs. These are the outputs. Now here important thing is about the master input. Master input is here. This is J. And master input here it is K. Now the important thing is about the clock. See here properly clock कैसे दे रहा हूं मैं. I want everyone to pay attention. Here I am giving the clock. And यहां से ही मैंने एक आउटपुट निकाला और बाद में वहां पे मैंने नॉट लगाया. And it is given to this as a clock. It is given to this as a clock. Okay, so here also it is a clock. अब ये क्लॉक और ये क्लॉक में फर्क क्या है? See here all of you. यहाँ पे जो क्लॉक है, यहाँ पे जो क्लॉक है मैं यहाँ पे बना रहा हूं. यहाँ पे जो क्लॉक है देखो कैसा है. पॉजिटिव एज. लेकिन वही क्लॉक लेके मैंने जब नॉट गेट लगाया तो यहाँ पे जो क्लॉक जाएगा वो जाएगा निगेटिव एज. So this is the main difference of the clock. This is the main difference of the clock. The same clock is used, but in the master we are giving positive edge trigger. In the slave we are giving negative edge trigger. The same clock with the NOT gate, we can have negative edge trigger. So this is the particular master and slave configuration of JK flip flop, which will avoid race around condition. Now you will ask me, sir, how it is going to avoid the race around condition? Now here, if you see properly, all of you pay attention. If I am asking you the question, master JK flip flop is triggered by positive edge or by negative edge? Tell me the answer. Master JK flip flop is triggered by using positive edge trigger or negative edge trigger? Negative. Please remember, give me the answer properly. ये देखो मैं क्या बना रहा हूं. अगर ऐसा है और अगर ऐसा है, ठीक है ना? Now keep this thing in mind. Now tell me, I will put the question in other way. You tell me your master JK flip flop will give output at which clock? Positive edge या फिर negative edge? Positive edge. Positive edge. Very good. Positive edge. Yes, very good. It is a positive edge. Now tell me your slave JK flip flop will give output at which clock edge? Negative. See properly. पॉजिटिव. इट इज अ पॉजिटिव. यहाँ पे मैंने बबल बनाया क्या? यहाँ पे मैंने बबल बनाया स्लेव के यहाँ पर.
ये देखो स्लेव को मैंने ऐसा किया और मैंने यहाँ पे बबल बनाया क्या? नहीं बनाया ना? No, sir. No. So I am going to comment one statement. Listen properly. Your master JK flip flop will give output only when your clock pulse is positive H, and your slave JK flip flop will give output only when your clock is positive H. Do you agree with this? सर क्लॉक बार आएगा ना? हाँ, क्या क्या बोला? सर आपने जेके को क्लॉक दिया है तो फिर क्लॉक बार आएगा ना जे स्लेव के लिए? नहीं, फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बोलो। अगर आपने क्लॉक इसको दिया है जेके को तो उसका मास्टर को या स्लेव को? सॉरी मास्टर को, तो स्लेव को कॉम्प्लीमेंट जाएगा ना? हाँ बराबर है, उसको कॉम्प्लीमेंट जाएगा। यू आर राइट। तो क्लॉक बार आएगा ना? नहीं, क्लॉक बार नहीं आएगा, क्लॉक बार नहीं आएगा। मैंने क्लॉक ही बनाया, लेकिन मैंने वो निगेटिव कैसे दिखाया? मैंने निगेटिव ऐसा दिखाया, निगेटिव एच ट्रिगर। यस यस। हाँ, और पॉजिटिव मैंने ऐसा दिखाया, ये देखो, ये पॉजिटिव मैंने ऐसा दिखाया, बराबर है। तो मैं ये कमेंट कर सकता हूँ क्या कि मास्टर और स्लेव को आउटपुट आने के लिए दोनों को भी पॉजिटिव एज ट्रिगर चाहिए, क्लॉक पल्स? हाँ या ना? Yes. हाँ, अभी ये आपने हाँ बोला। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई ड्रॉ द इन्फरेंस दैट at a time only one JK flip flop will give the output? Can I comment that at a time only one JK flip flop will give the output? Can I comment that at a time only one JK flip flop will give the output? मास्टर रहे या फिर स्लेव रहे, एट अ टाइम ओनली एक ही देगा। Do you agree with this or no? Yes or no? मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. हाँ, Yes. यस। तो आपने मेरे लास्ट का इन्फ्रेंस के लिए आपने जवाब नहीं दिया। Again I am repeating. Can I make an inference that at a time only one JK flip flop will give the output at a time? अच्छा ठीक है, लिसन हियर। व्हेन यूर क्लॉक, आप मास्टर को जो क्लॉक दे रहे हो, ओके, वो क्लॉक अगर आप ऐसा दे रहे हो, बिकॉज क्लॉक हम ऐसे ही देते हैं ना, बट दिस इज अ पॉजिटिव एज, तो जब आप क्लॉक दे रहे हो और जब आपका पॉजिटिव एज आता है ये, तब जाके ये मास्टर ऑन रहेगा। लेकिन यही क्लॉक इन्वर्ट होके यहाँ पे ऐसा जा रहा है, तो ये स्लेव काम नहीं करेगा, और जब आपका ये जो क्लॉक है ऐसा जाते जाते जब नीचे जा रहा होगा, तब ये मास्टर काम नहीं करेगा। लेकिन वही इन्वर्ट होके वो जो एरो, डाउनवर्ड एरो है, वो ऊपर वाला एरो बन जाएगा, और ये जब ऊपर वाला एरो बन जाएगा, देन ये स्लेव काम करेगा। डू यू एग्री विद दिस? और shall I explain you once again? Sir, Once again. हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो, फिर से मैं बता रहा हूँ। Now your clock pulse is this, ये कंटिन्यूस क्लॉक पल्स रहता है ऐसा। अब मैंने मास्टर और जेको को मैंने ऐसा बनाया, ये ट्रायंगल दिया है, देन इट इज अंडरस्टूड दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर। तो जब आपका क्लॉक ऐसा जाके, फिर से नीचे जाके, फिर से ऊपर जाके, फिर से नीचे जाके, फिर से ऊपर जाके, फिर से नीचे जाके, ये क्लॉक कंटिन्यूस रहता है। लेकिन जब आपका क्लॉक नीचे से जब ऊपर जाता है, ये पॉजिटिव, जब नीचे से जब ऊपर जाता है, तब आपका ये मास्टर एक्टिव होता है और आपका आउटपुट आता है। लेकिन वही ड्यूरेशन में और वही इंस्टेंट में आपका वही क्लॉक जो नीचे से ऊपर जा रहा है, वो स्लेव में
ऊपर से नीचे जाता है, ऊपर से, बिकॉज यहाँ पे आपने नॉट लगा है। जो क्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा है वही स्लेव के लिए ऊपर से नीचे जा रहा है। ऊपर से जब नीचे जाता है तब ये स्लेव आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पॉजिटिव एज क्लॉक लगा है। तो जब ऊपर से नीचे जाएगा तो ये स्लेव काम नहीं करेगा, तो वो टाइम पे सिर्फ मास्टर काम करेगा, क्योंकि मास्टर को कौन सा क्लॉक मिल रहा है, नीचे से ऊपर वाला। अभी ये देखो, क्लॉक नीचे से ऊपर गया, फिर वहां पे कुछ देर तक रहा, फिर से वहां से फिर से नीचे आया। जब वो ऊपर से नीचे आता है, then your master is not going to give you output because this is a positive edge trigger। लेकिन जब ऊपर से जब नीचे जा रहा है तो वही इन्वर्ट होके ये स्लेव के इनपुट को क्या जा रहा है, क्लॉक कौन सा जा रहा है, नीचे से ऊपर वाला, क्योंकि आपने वहां पे इन्वर्टर लगाया। तो वो जो क्लॉक नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव एज, और आपका स्लेव भी पॉजिटिव एज क्लॉक ट्रिगर पे ही लगाया आपने। तो आपका जब यहाँ पे नीचे से जब ऊपर जाएगा, then your slave will give you output, then this will give you output, and this will go on, क्योंकि क्लॉक आपका कंटिन्यूस होता है। this will go on। so during the ये अभी ये जो क्लॉक आपने लगाया है, जब ये क्लॉक आपका नीचे से ऊपर जाएगा तब मास्टर काम करेगा और स्लेव काम नहीं करेगा, और जब ये क्लॉक ऊपर से नीचे जब जाएगा तब ये मास्टर काम नहीं करेगा, तब आपका स्लेव काम करेगा, क्योंकि जब ऊपर से नीचे जाएगा तो इन्वर्ट होके वो नीचे से ऊपर जा रहा होगा। then your slave will work। I hope you have understood this now। अभी समझा आप लोगों को? सर हाँ, जब स्लेव वर्क करेगा तब मास्टर से आउटपुट नहीं आएगा तो स्लेव को इनपुट कैसे जाएगा? इनिशियली मास्टर ऑन होता है और वो मास्टर का आउटपुट अवेलेबल होता है एज एन इनपुट टू द स्लेव, और सेकेंड राउंड में मास्टर डिसेबल होता है और स्लेव अनेबल होता है, और जब स्लेव अनेबल होता है तब तक उसके पास इनपुट अवेलेबल होता है जो मास्टर का आउटपुट होता है। अंडरस्टूड? यस तो सर। पहले वाला आउटपुट लेगा। हाँ, तो मास्टर का जब मास्टर का आउटपुट अवेलेबल है तब स्लेव ऑन है और तब मास्टर ऑफ है, एंड दिस विल गो ऑन। ये दिस विल गो ऑन क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ द क्लॉक, बिकॉज दिस क्लॉक इज अ कंटिन्यूअस वन। मैंने पहले बताया था क्लॉक इज अ वेव फॉर्म, ऑन ऑफ। सो मास्टर ऑन, स्लेव ऑफ, then master off, slave on, then again master on, slave off, then again master off, slave on. This will go on. So I mean to say that at a time only one JK flip-flop will give you the output, and that all depends upon your clock and this arrangement, because of this arrangement, and both JK are edge trigger, both JK are positive edge trigger, अब यहाँ पे मैंने जो इनिशियल क्लॉक बनाया था वो मैंने ऐसा बना कि ऊपर का एरो दिया था, और यहाँ पे मैंने बना कि उसको नीचे का एरो दिया। ये क्यों दिया? बिकॉज ऑफ इन्वर्टर। यहाँ पे ऊपर दिखा रहा हो तो यहाँ पे मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे मैं नीचे दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा because of the inverter। So have you understood the concept of JK flip-flop, master and slave? Yes, sir. Everyone now? Yes, sir. Okay। Yes, sir. I think we can stop for today। इसका explanation छोटा सा है, इसका explanation 2 या 3 सेंटेंस में, that thing I will take in the next lecture। मनप्रीत, अगर सैटरडे को 1 घंटा मिलता है तो let me know, otherwise leave it, no problem। ठीक है? Okay, sir. Okay। So attendance हो गया क्या? Yes, sir. Okay। So if you have any questions, you can stay, others can leave। Thank you। Thank you, Thank sir. you, sir. Okay। थैंक यू सर। Bye bye। Thank you, sir.